हम सेकेंड लेसन का क्वेश्चन बैंक देखेंगे हिस्ट्री. क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस. फर्स्ट वन, डैश वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. Alexander Cunningham. Second one, dash translated the Sanskrit text of Hitopadesh in German language. Friedrich Max Müller. Third one, Raj Tarangini is the history of dash Kashmir. Fourth one, Mahatma Phule unfolded the history of the Shudrati Shudra communities in his book Gulamgiri. Fifth one, nationalistic writing in Maharashtra were inspired by dash Vishnu Sastry Chiplunkar. Identify the wrong pair. Who were the Shudras? Dr. Baba Saheb Ambedkar. Stree Purush Tulana. Feminist writing. The Indian War of Independence 1857. Marxist history. Grand Duff. Colonial history. इसका wrong pair है The Indian War of Independence 1857 Marxist historiography and right pair nationalistic historiography आएगा instead of Marxist historiography. Second one wrong pair Pandita Ramabai स्त्री पुरुष तुलना. Right pair the high class Hindu woman. Third one wrong pair Ziauddin Barani Tariq I Mubarak Shahi. Right pair Tariq I Pirushahi. Fourth one wrong pair Friedrich Max Müller translated Hitopadesh in French, not in French but in German language. Question number 2, complete the following chart. James Mill, The History of British India. Second, Grand Duff, A History of Marathas. इन्होंने ये बुक लिखा था. Mount Stuart Elphinstone, The History of India. S.A. Dange, Primitive Communism to Slavery. Dr. Baba Saheb Ambedkar, Who Were the Shudras. Ideological schools of historiography in the post-independence era. Marxist historiography, subaltern history, feminist history. Feminist historians and their writings. ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना. पंडिता रमाबाई द हाई कास्ट हिंदू वुमेन. मीरा कोसांबी क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स फेमिनिस्ट essays in social history. Dr. Sharmila Rege writing caste, writing gender, reading dialects, women trisomies. Indian historiographies of India. विनायक दामोदर सावरकर, महादेव गोविंद रनादे, राम कृष्ण गोपाल बंदरकर, रमेश चंद्र मजुमदार. विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, ये भी एक ऑप्शन है, आप लिख सकते हो. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये एक स्कोरिंग पार्ट है. इसमें आप लोग 3 क्वेश्चन के आंसर लिखना है. इसमें से ये जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है, दिस 2 क्वेश्चन ईच फॉर 1 मार्क एंड दिस थर्ड क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क. तो ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोग एलाबरेट करके लिखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन विच स्टेट वॉज दी सोहागौरा कॉपर प्लेट फाउंड? इट इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश. सिर्फ एक वर्ड लिखना है आपको, 1 मार्क मिलेगा. वेयर एल्स कैन यू फाइंड द मार्क फाउंड ऑन सोहागौरा कॉपर प्लेट? इट इज फाउंड ऑन पंच मार्क्ड कॉइन्स. ओके, तो ऐसे सब एक एक वर्ड लिखने से आपको 1 मार्क मिलेगा. नाउ दी थर्ड क्वेश्चन, दिस कंटेन्स फॉर 2 मार्क, सो you have to elaborate and write it. Okay, which history we can know from Sohagaura copper plate? उसमें से हम लोग को कौन सा हिस्ट्री दिखता है? As the Sohagaura copper plate is supposed to be from the Maurya period, it is from Maurya period. We get the information about political, social and economic condition of this period. The inscription record a royal order that the grain stored in the granary should be distributed carefully, which is suggested the precaution taken in the time of famine. This ends the second chapter question bank solution. Stay tuned, third chapter question bank is coming soon.